Dawn vocabulary with Urdu meaning. The recent rally of the PTI chairman in Rawalpindi was notable for a variety of reasons. Above all, it revealed the frenetic workings of a mind in the grip of an idée fixe, power. In the wake of the customary animosity or hit list, one front was closed and another opened up. A politics of agitation had ended, giving way to a politics of virtuosity. Street had suddenly ceded to Parliament. Mass resignations from the two provincial assemblies in Punjab and KP, controlled by the PTI, were on the cards. A number of observers waxed eloquent about the ingenuity of the move. The former cricketing icon was lauded for his political skill. It was, though, all too apparent that, by November 26, the PTI chairman had actually exhausted all his options and that a particular official appointment, central to his strategy, had already been made and he was left with his last card. Back-patting aside, it is important to recognize the realities of the situation. The political gambit in question must be seen for what it really is, a final bid by the PTI to wrest power, at all costs, from the federal government. The political gambit must be seen for what it is. The move to resign from or disband the assemblies smacks, typically, of political opportunism. Granted that our political lexicon has been expanded, it must, however, surely be admitted that the privileging of politics as play necessarily implies that the interests of the Federation itself are being made, for no very good reason, to take a back seat. The 18th Amendment, conferring varieties of autonomy on the country's provinces, has suddenly, and somewhat unilaterally, taken center stage. One is reminded of what the PTI head himself declared not long ago in a late-night televised broadcast which amounted to a threat relating to the stability of the Federation. By a curious irony, his words seem, disquietingly, to ring truer, albeit in a different sense, today than they did then. Specific constitutional arguments aside, it matters that we see that we run the risk, under the present circumstances, of subverting the federal principle itself in the name of federalism. We are all aware of the issue of a balance between the federating units and the Federation and the fact that this is crucial. What we seem to be forgetting today, however, is the fact that there should also properly be a community of purpose among the federating units. No one province in the Federation, whether Punjab or KP, has the right, in other words, either to impose its individual will on any other province or to act in a manner prejudicial to the interests of any other province. To consider doing so is to think in hegemonistic rather than, properly speaking, federal terms. That, in so many words, was the statement being made about the PTI head at the sizable rally of November 30th by the chairman of the PPP as he spelt out his party's traditional commitment to the Federation. It is entirely relevant that the 18th Amendment was passed by none other than the PPP government of the day. It can legitimately be argued that both the provinces of Sindh and Balochistan are faced today with force majeure in the shape of the ecological disaster that recently struck them and that neither province is consequently in a position at present to hold elections. That puts the whole matter of dissolution of the assemblies in Punjab and KP, followed by elections in the two provinces in question. Any such move would only prove discriminatory and prejudice the outcome of subsequent elections in the two remaining provinces, striking at the very principle binding the federal whole. Democracy in a country such as ours, with its given social and economic conditions, cannot, in any case, be taken to amount to a mere electoral drill but has to be allowed to be a system of comprehensive consequence. Many of us have still not forgotten the spectacle of democracy, literally and figuratively, behind bars during the previous government's abortive rule. Civil liberties were suspended. Inflation was the result of merely somewhat cavalier economic improvisation. The existing coalition is in place precisely because of the failure of the former government to follow up on its utopian promises and run the government or manage the economy efficiently. As for the impression that the star sportsman of yore has come of age politically, we have no option but to hedge our bets. His somewhat generalized and embryonic libertarian vision is reason enough. It is important for us all to bear in mind that democratic freedom, especially in a federal setup,
does not have to do with the mere will of a hypothetical majority, but is a far more widespread and complex affair. Freedom, in any case, is an esoteric phenomenon. It is not built into a particular system, but has to be felt to be there. It is not a merely large idea trumpeted at populist rallies, but, rather, a subtle atmosphere, an air, an undefined space. The writer is the founder-chairman of Dialogue, Pakistan, a local think tank. Published in Dawn, December 3, 2022. रावलपिंडी में पीटीआई के चेयरमैन का हालिया जलसा मुख्तलिफ वजूहात की बना अशारिया पर काबिल जिक्र था। सबसे बढ़कर उसने एक आईडी फिक्स की गिरफ्त में जहन के जुनूनी कामकाज का इंकिशाफ किया। ताकत रिवायती दुश्मनी या हिट लिस्ट के पेश नज़र एक महाज बंद कर दिया गया और दूसरा खोल दिया गया। एहतजाज की सियासत खत्म हो चुकी थी, जिसने एक काबिलियत की सियासत को रास्ता दिया था। सड़क अचानक पार्लियामेंट के हवाले कर दी गई थी। पीटीआई के जेर कंट्रोल पंजाब और केपी की 2 सूबाई असेंबलियों से बड़े पैमाने पर इस्तीफों का इम्कान है। मुबस्सरीन की एक बड़ी तादाद ने इस इक़दाम की चालाकी के बारे में वाज़ेह तौर पर मौन किया। क्रिकेट के साबिक आइकॉन को उनकी सियासी महारत के लिए सराहा गया था। ताहम ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि 26 नवंबर तक पीटीआई के चेयरमैन ने अपने तमाम ऑप्शंस ख़त्म कर दिए थे और उनकी हिकमत अमली के मरकज़ी किरदार में एक ख़ास सरकारी तकर्री पहले ही की जा चुकी थी और उनके पास उनका आखिरी कार्ड रह गया था। पीठ थपथपाते हुए सूरत हाल की हकीकतों को तस्लीम करना ज़रूरी है। सवाल यह है कि ये असल में क्या है, इसके लिए देखा जाना चाहिए। पीटीआई की तरफ से वफाकी हुकूमत से हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने के लिए हतमी बोली। ये क्या है, इसके लिए सियासी गेमबट को देखा जाना चाहिए। असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने या तहलील करने का इक़दाम आमतौर पर सियासी मौका परस्ती की बो आती है। इस बात को तस्लीम करते हुए कि हमारी सियासी लुग़त को वसअत दी गई है, ताहम ये ज़रूर तस्लीम करना होगा कि सियासत को खेल के तौर पर पेश करने का मतलब यह है कि वफाक के मुफादात को बग़ैर किसी अच्छी वजह के पीछे बैठने के लिए बनाया जा रहा है। 18वीं तरमीम, जिसमें मुल्क के सूबों को मुख्तलिफ किस्म की खुद मुख्तारी दी गई थी, अचानक और किसी हद तक यकतरफ़ा तौर पर मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। कुछ अरसा कबल पीटीआई के सरबराह ने रात गए टेलीविज़न पर नशर होने वाली एक नशरियात में जो ऐलान किया था वो वफाक के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा था। एक अजीब व गरीब सितम ज़रीफ़ी से इसके अल्फाज परेशान कुन तौर पर सच बलिए होने लगते हैं, अगरचे एक मुख्तलिफ मानी में आज के मुकाबले में उन्होंने इस वक्त किया था। मखसूस आइनी दलाइल को एक तरफ रखते हुए ये बात अहम है कि हम देखते हैं कि मौजूदा हालात में हम वफाकियत के नाम पर खुद वफाकी उसूल को ख़त्म करने का ख़तरा मोल ले रहे हैं। हम सब वफाकी इकाइयों और वफाक के दरमियान तवाज़ुन के मसले और इस हकीकत से आगाह हैं कि ये इंतहाई अहम है। ताहम आज हम जिस चीज़ को भूल रहे हैं वो ये है कि वफाकी इकाइयों के दरमियान मकसद की एक कम्यूनिटी भी मुनासिब तरीके से होनी चाहिए। वफाक के किसी भी सूबे को, चाहे वो पंजाब हो आकेपी, यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी मर्जी किसी दूसरे सूबे पर थोप दे या किसी दूसरे सूबे के मुफादात के लिए नुकसानदेह अंदाज में काम करे। ऐसा करने पर गौर करने के लिए मुनासिब तरीके से बोलने के बजाय वफाकी शराइत के बजाय हाकिमियत में सोचना है। ये बहुत से अल्फाज में पीपीपी के चेयरमैन की जानिब से 30 नवंबर के बड़े जलसे में पीटीआई के सरबराह के बारे में बयान दिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने वफाक के साथ अपनी पार्टी की रिवायती वाबस्तगी को बयान किया था। ये बात बिल्कुल मुतालिका है कि 18वीं तरमीम किसी और ने नहीं बल्कि इस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मंजूर की थी। ये बात जायज़ तौर पर कही जा सकती है कि सिंध और बलूचिस्तान के दोनों सूबों को आज माहौलियाती तबाही की शक्ल में ताकत के इस्तेमाल का सामना है, जिसने उन्हें हाल ही में मुतासिर किया था, और उसके नतीजे में कोई भी सूबा इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंतखाबात का इनेकाद कर सके। इससे पंजाब और केपी में असेंबलियां तहलील करने और उसके बाद दोनों सूबों में इंतखाबात के पूरे मामले पर सवालिया निशान लग जाता है। इस तरह का कोई भी इक़दाम सिर्फ इम्तियाजी सलूक साबित होगा और बाकी 2 सूबों में बाद में होने वाले इंतखाबात के नताइज पर तासुब का बाइस बनेगा, जिससे वफाकी पूरे को पाबंद करने वाले उसूल पर हमला होगा। हमारे जैसे मुल्क में जमहूरियत, जिसके दिए हुए समाजी और मुआशी हालात हैं,
किसी भी सूरत में महज इंतखाबी मश्क के ज़ुमरे में नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसे एक जामे नतीजा खेज निज़ाम बनने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हम में से बहुत से लोग अभी तक जमहूरियत के तमाशे को नहीं भूले हैं। लफ्जी और अलामती तौर पर पिछली हुकूमत के नाकाम हुक्मरानी के दौरान सलाखों के पीछे शहरी आज़ादियां मुअत्तल कर दी गईं। इफरात ज़र महज किसी हद तक लापरवाह माशी इस्लाह का नतीजा था। मौजूदा इतिहाद की वजह यह है कि साबिक हुकूमत अपने यूटोपियाई वादों पर अमल करने और हुकूमत चलाने या मईशत को मुअस्सर तरीके से चलाने में नाकाम रही है। जहां तक इस तासुर का ताल्लुक है कि माजी का स्टार स्पोर्ट्समैन सियासी तौर पर उम्र में आ गया है, हमारे पास अपनी शर्तों को बचाने के सिवा कोई चारा नहीं। इसका किसी हद तक अमूमी और जनीन आज़ादी पसंद नुक्ता नज़र काफ़ी वजह है। हम सब के लिए ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जमहूरी आज़ादी ख़ास तौर पर एक वफाकी सीट अप में सिर्फ एक फर्जी अक्सरियत की मर्जी से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा मामला है। आज़ादी किसी भी सूरत में एक पोशीदा रुझान है। यह किसी खास निज़ाम में तामीर नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ होने के लिए महसूस किया जाना चाहिए। ये महज एक बड़ा ख्याल नहीं है जो अवामियत पसंद रैलियों में पेश किया जाता है, बल्कि एक लतीफ़ माहौल, एक गैर वाज़े जगह है। मज़मून निगार एक मकामी थिंक टैंक डायलॉग पाकिस्तान के बानी चेयरमैन हैं। डान अखबार में शाये शुदा 3 दिसंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.